Good afternoon, friends. This video on one of the new feature and functionality which is developed by GSTN and advisory also being issued on 8th of January 2022 pertaining to interest calculator in GSTR 3B is a good feature. As per advisory, it is being stated now interest going to be auto computed and auto-populated in table 5.1 of GSTR 3B of next tax period. On similar line as late fees is being computed and auto-populated. Interest going to be calculated on two broad parameters. First, if there is delay in filing GSTR 3B and making payment of tax. So we all know that GSTR 3B for monthly filer, due date is 20th of next month. Those who are quarterly filer, it is either 22nd or 24th of the month following the end of the quarter. Let's assume I'm talking about monthly filer and current tax period is January 2022, which is due by 20th February. If there is delay in filing of GSTR 3B and making payment of tax, let's say by 5 days. So you're filing on 25th of February as against 20th February. So there's delay of 5 days. So interest is going to be calculated for 5 days on your cash portion of GST liability. What is this cash portion of GST liability? Let's say you're having your output tax for 5 lakh rupees and you're having 3 lakh rupees in your e-credit ledger. Then you have to pay only 2 lakh rupees from your e-cash ledger. That is your net tax liability to be paid through e-cash ledger. So interest is going to be calculated on 2 lakh rupees at the rate of 18% per annum, meaning thereby it is only for the 5 days. So only 5-day delay. So you have to pay interest at the rate of 18% per annum. It is not like for part of the month, then you have to pay full for the month. It is only for the 5 days. That is what the GST concept, and the rate is 18% per annum. This is the part 1. And this interest is now going to be auto computed and auto populated in your GSTR 3B of next tax period, which is February, and you're going to make payment by 20th March. That is what the first position. Second, interest may also be required to pay on delay for declaring your output tax liability pertaining to outward supply of previous past tax period. So there may be a situation that I'm referring to January, which is current tax period, but you may have a liability of November and December 2021. You may also declare your liability of November and December 2021 in the period of GSTR 3B of January 2022. Another feature which is now being inserted, that you can declare your liability for the current tax period, which is January 2022, and for the past period, which is for November and December 2021. So interest is going to be calculated accordingly. For November, it is due by 20th of December. Until the time you are making payment of tax, interest is going to be calculated at the rate of 18% per annum on the basis of number of delay in making payment of tax. The feature which is being made available
you can declare your tax period wise liability, which is November and December for the past period, and for January, which is current tax period. And interest is going to be calculated accordingly at the rate of 18% per annum. It's a good feature. Auto computed, auto populated. Further, this field is editable field. Fortunate part. And why I'm saying fortunate? Region H. As per this advisory, they are saying for current tax period January 2022, they are saying interest is going to be calculated by the system on your net tax liability, which is to be paid through e-cash ledger. So 5 lakh rupees your output tax, 3 lakh rupees in your e-credit ledger, net payment to be made 2 lakh rupees, interest to be calculated on net tax liability to be paid by e-cash ledger. Good one. And this is what the provision. We all know that section 50 subsection 1, which is talking about interest to be paid for non-payment or short payment of tax. And it is only to the extent of your net tax liability which is to be paid through e-cash ledger. It is retrospectively amended from July 1, 2017. But what is contradictory in this advisory, and this is the highlight of this particular video, this advisory is saying if you're declaring your past period tax liability, in our example, we have said November and December 2021. And they're saying if you're paying the liability of past tax period, even through your e-credit ledger, then what happened? Interest going to be calculated on gross tax liability. In simple example, they are referring that interest is going to be calculated on total amount of tax liability either paid through e-credit ledger or paid through e-cash ledger. That is what advisory is saying. In my humble submission, it is contradictory. As per section 50 subsection 1, it should be only on net tax liability to be paid through e-cash ledger. That's what the retrospective amendment was done in section 50 subsection 1. Only exception is unless any proceedings is being initiated by way of issuance of so-called notice either under section 73, which is non-fraud cases, section 74, which is fraud cases. This is the only exception. Otherwise, interest going to be calculated only on net tax liability paid through e-cash ledger. So this advisory is contradictory pertaining to this point which I explained to all of you. Fortunate part, this field table 5.1, which is auto computing and auto calculating and then auto populated, it's editable field. So my humble submission to all of you would be kindly make the correction. Even the system is calculating interest pertaining to past tax period on gross tax liability, which is paid either through e-credit ledger or through e-cash ledger, you should make the correction. Calculate your interest only to the extent of net tax liability paid through e-cash ledger. Now, once you are editing this field and you are downward calculating your interest as per system generated auto computed interest, it will flag as a rate. Let it be rate. No problem. Let it be rate. But you must pay interest only on net tax liability paid through e-cash ledger. That's what the provision all about. But irony is, this advisory is little contradictory
And saying so I'm just giving food for thought that interest, let it be litigated. Even though it is getting auto-computed, auto-calculated, and auto-populated, for the past tax period, you must pay only on net cash liability. Let it be red flag before you. Fortunate part, editable, but my only submission. Why system GSTN creating a field that for the past tax period, it is on gross tax liability as against net tax liability to be paid through eCash ledger. So though interest calculator is very good, auto computed and auto populated, for current tax period January 2022, calculating on net tax liability paid through eCash ledger, very well done, and getting auto populated in table 5.1 of GSTR 3B of next tax period, very good. But pertaining to the previous tax period, past tax period, now feature is being added, well done, that you can declare your past period liability, but interest going to be calculated on gross tax liabilities, contradictory in this advisory. Summarize, GSTN ने एक एडवाइजरी इशू की कि अब हमारा इंटरेस्ट ऑटो कंप्यूट होगा, ऑटो पॉपुलेट होगा इन GSTR 3B. वेल डन. इन्हें कहा जो इंटरेस्ट हम कंप्यूट करेंगे और ऑटो पॉपुलेट करेंगे वो टेबल 5.1 ऑफ GSTR 3B जो नेक्स्ट टैक्स पीरियड होगा उसमें वो ऑटो पॉपुलेट होगा. तो अगर जनवरी 2022 अगर आपका टैक्स पीरियड है और अगर आपने डिले फाइलिंग किया है, डिले GSTR 3B फाइल किया है, जैसे मंथली को बाय 20th फाइल करना पड़ता है, जो क्वार्टरली फाइलर है उनके लिए 22nd या 24th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द क्वार्टर है. तो हम मान लेते हैं मंथली फाइलर है, उसकी 20 फरवरी की नेक्स्ट डेट है, पर उसने 25 फरवरी को फाइल किया, 5 दिन का डिले हुआ. इट वुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ड्यू डेट टू एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट. तो आपको 5 दिन के ऊपर 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इंटरेस्ट गोइंग टू बी कैलकुलेटेड ऑन नेट टैक्स लायबिलिटी. इसका मतलब हुआ मान लीजिए 5 लाख रुपए की आपका आउटपुट टैक्स और 3 लाख रुपए आपके पास ई क्रेडिट लेजर में है, तो आपको 2 लाख रुपए कैसे देने हैं. तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम 5 दिन के लिए कैलकुलेट होगा ऑन ओनली ऑन 2 लाख रुपीज विच इज नेट टैक्स लायबिलिटी. होना भी चाहिए. सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड हो गया. उन्होंने कहा कि अब इंटरेस्ट की लायबिलिटी ओनली ऑन नेट टैक्स लायबिलिटी जो होगी, जो आप ई कैश लेजर से पे करेंगे उसके ऊपर होगी. दूसरा उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए अगर पास पीरियड कि अगर आपकी कोई लायबिलिटी है, मान लीजिए नवंबर एंड दिसंबर 2021 की कोई लायबिलिटी है जिसको आप जनवरी 2022 में दिखा रहे हैं, तो एक और फीचर इन्हें दे दिया. GSTR 3B में आप अपने पास टैक्स पीरियड की लायबिलिटी टैक्स पीरियड वाइज डिक्लेयर कर सकते हैं. तो यानी एक करंट टैक्स पीरियड जनवरी 2022 और एक फीचर होगा पास टैक्स पीरियड वाइज नवंबर 21 दिसंबर 21 की आप लायबिलिटी अलग से दिखा दीजिए. अब जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा पर्टेनिंग टू पेमेंट ऑफ पास्ट टैक्स पीरियड, इस एडवाइजर में यह कहा गया कि इंटरेस्ट आपके ग्रॉस टैक्स के ऊपर लगेगा. तो मान लीजिए 5 लाख रुपए आपके एज्यूम कर लेते हैं नवंबर और दिसंबर की लायबिलिटी थी और 3 लाख रुपए आपके पास ई क्रेडिट लेजर में थे, देने आपको 2 लाख रुपए ही थे कैश में, एज्यूम कर लेते हैं हम इस बात को. तो कैश से सिर्फ 2 लाख देने थे. बट ये एडवाइजरी अब कहती है अगर ये पास पीरियड की टैक्स लायबिलिटी है जिसको आपने करंट टैक्स पीरियड में दिखाया,
तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेगा वो ग्रॉस टैक्स के ऊपर करेगा, 5 लाख के ऊपर करेगा, आइदर पे थ्रू ई क्रेडिट लेजर 3 लाख रुपए और थ्रू ई कैश लेजर 2 लाख रुपए। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। इस वीडियो में मैं बस आपको यही ड्रॉ करना चाह रहा था। ये एडवाइजरी मेरे हिसाब से एज पर माई हम्बल सबमिशन कॉन्ट्रडिक्टरी एज पर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 जो रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड हुआ। उसने कहा कि आपको इंटरेस्ट नेट टैक्स पे देना है जो आप थ्रू ई कैश लेजर पे करेंगे, बट एडवाइजरी कॉन्ट्रडिक्टरी है। फॉर्चुनेट पार्ट, इनने टेबल 5.1 जहां पे ऑटो कैलकुलेट एंड ऑटो पॉपुलेट हो रहा है इंटरेस्ट, एडिटेबल फील्ड बनाई है। आप इसको एडिट कर सकते हैं, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। जब आपने करेक्ट किया और लायबिलिटी को अगर नीचे डाउनवर्ड कैलकुलेशन किया तो ये आपको रेड फ्लैग करेगा, लेट इट बी, होने दीजिए। हमें तो इंटरेस्ट नेट टैक्स पे देना है विच इज टू बी पे थ्रू ई कैश लेजर। कहीं ऐसा नहीं है कि करंट टैक्स पीरियड के लिए वो नेट टैक्स की बात करता है और पर्टेनिंग टू पास्ट टैक्स पीरियड जहां मेरे पास 3 लाख का ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस था, मैं उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे करूंगा। ये एडवाइजरी टू दैट एक्सटेंट कॉन्ट्रडिक्टरी है एज पर माई हम्बल सबमिशन। बट मैं ये कहना चाहूंगा, जब हम कोई ऐसा फीचर डेवलप कर रहे हैं, हम लिटिगेशन के पॉइंट क्यों इनवाइट करते हैं? फॉर व्हाट रीजन वी आर इनवाइटिंग? वी शुड नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स विच इज नॉट क्रिएटिंग ईज ऑफ बिजनेस। फॉर्चुनेट पार्ट एडिटेबल है, आप जरूर एडिट कीजिएगा। लेट इट बी, सो कॉज नोटिस आने दीजिए। अगर आएगी तो फिर हम इस पे लिटिगेट और फाइट करेंगे, बट एज पर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 मुझे इंटरेस्ट नेट टैक्स लायबिलिटी पे देना है जो मैं ई कैश लेजर के जरिए पे करता हूं, चाहे वो करंट टैक्स पीरियड का हो, चाहे वो पर्टेनिंग टू पास्ट टैक्स पीरियड का हो। बट एक फीचर है, डेवलप किया गया, एडवाइजरी इशू हो गई। एडवाइजरी मेरे कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप एडवाइजरी भी देख सकते हैं। बट आई हैव ट्राइड टू मेक दिस वीडियो टू सिंप्लीफाई दिस न्यू फीचर, new functionality, the way of auto calculation and auto population, and the contradiction. Thanks for watching. Lot many on GST changes. Stay tuned on our YouTube channel. Thanks for watching. Thank you very much.